Yes. Good afternoon, one and all present here. We'll start the session. The topic of today's webinar is on motor control, the concept and its theoretical framework. I, Tejas Chokshi, on behalf of BITS Institute of Physiotherapy, I welcome you all. Our today's resource person is our beloved Dr. Rushikesh Joshi. He is specialized in neurology field. He is a experience of 7 years and 6 months, more than 7 years of experience. He is also experts in document management, Office 365, Microsoft Office and management. He has a top skills in neurological physiotherapy, healthcare and public safety. He is a certified in integrated course of manual therapy. He's also received the honors of award like Young Achievers Award, Appreciation and Recognition in Academics Award. I welcome you, sir. Instruction for the participants. Kindly ask the question answer session at the end of the session. And the presentation will be on the naming of Tejas Chokshi. Yes, over to you, Rushikesh, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. Good afternoon, everyone. Thanks, Tejas, sir, for the wonderful introduction. I welcome all the students, my colleagues, and my dear friends. My topic for today's webinar is motor control. When I was asked what topic you would like to present, the first thing clicked in my mind is motor control. I had my reason. I was like, there are many concepts ongoing. Our BPT and MPT students, they always have many queries regarding the concepts of motor control. So the first thought what I had to take the seminar was on motor control. So I assure I'll try my level best to simplify the concept, and especially for the experts working in the neurological physiotherapy. We should know this as a physio. The motor control concepts are very important, and even for handling the patients, this will be helpful, I hope. Fine. So I'll just start with the presentation. Tejas sir, please help me in moving the slides. Yes, sir. Thank you. All right. So what do we understand by motor control? The word itself is quite confusing. Like we think motor control, तो हमको पहले ही ऐसा लगता है कि भी motor है मतलब muscle. But let me make it very clear that motor control is not about muscles. It's all about the overall organization of the neuromuscular system. Right, so that's what I'm going to clear it today. So as you can see in the slides, movement is a critical aspect of life. We move around, we do various activities, we work, we play, we move around, we go to other places. So all the activities what we do, it is all because of the motor control what we have achieved in our life. So to be specific, it is essential for our ability to move around, and we define motor control as the ability to regulate or direct the mechanisms essential to the movement. All right, so motor control in simplified term is the ability to regulate and direct the mechanism. Okay, कोई भी चीज को regulate करना, direct करना. All right, तो अगर मुझे कोई चीज pick up करनी है, if I want to pick up something, if I want to move around, I want to stand up and get a glass of water, I need a motor control. I need to do some task. So for that task to get accomplished, my body should act accordingly. तो वो होता है मोटर कंट्रोल की वजह से. तो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में ये रहता है कि how the body does this thing. We are human beings. We have n number of abilities to do variety of activities, variety of sports we play. We have seen even a few people who can, do all the magical activities. So they have a very good balance. How they're able to control that movement. All right. So mechanism body में कैसे काम करता है? So that we'll be discussing. Next slide, please, Tejas sir. All right. So what is the concept? So before going to the core, the theory of motor control, I would like to tell you the concept first, because concept is like the basic building block. All right. So once you know this, the whole of the further theories will be clear.
So we just need to think over. All right. So motor control. What is motor control? We have many questions in mind. How does the CNS organize the individual muscles? We have many muscles in the body. We have various number of joints and so much complex system we have. But still, we are able to do all the activities very smoothly, very well coordinately. और हम task कर पाते हैं ultimately. तो होता क्या है? Movements होती है. But how our body manages all these things? So that question, we'll get the answer of it today. So how a sensory information from the environment and body used to select, control and execute the exact movement needed. अगर मुझे मेरा अभी लैपटॉप के बाजू में माउस पड़ा है, मुझे उसको लेना है तो मैं स्पेसिफिकली मेरे माउस को ही लेके परफेक्टली प्रिसाइजली स्मूथली मैं सारी मूवमेंट्स कर पाता हूँ, राइट? तो हाउ माय ब्रेन सेंसेस दिस थिंग, मुझे कैसे पता चलता है कि मुझे ये एक्टिविटी करनी है और कैसे मैं ये स्मूथली खत्म कर पाता हूँ? तो ये सारी चीजें हमारा ये मोटर कंट्रोल से अचीव होता है. ऑलराइट, सो दैट इज द concept we'll be discussing. Sir, next slide please, Tejas sir. All right, so as a physiotherapist, we should know this. Why? See, we are known as the movement scientist. Yes, some authors describe physiotherapist as motor control physiologist. Mind well, there are various fields where even only the movement analysis is done. Movement कैसी हो रही है और अगर नॉर्मल हो रही है, एबनॉर्मल हो रही है, नॉर्मल मूवमेंट को ऑब्जर्व करके उसमें से वेरिएशंस पाए जाते हैं कि हाउ द movements are getting disturbed, especially in the neurological conditions, following any orthopedic injuries and whatnot. So, being a physiotherapist, we should know the concepts of the motor control. So, let me make it very clear, it's not only for the neurological physiotherapist, it is for all the physios, because basically we are movement scientists and we are also the motor control physiologist, right? So we have to understand this. We spend a considerable amount of time retraining patients who have motor control problems. हमारे पास कई patients आते हैं, right? So what they lack is movement. As a physio, जब भी हमारा main goal एक ही रहता है, get back to normal. Patient को back to normal life लाओ. उसकी movements नहीं हो रही, उसकी movement initiate करो. Alright? So we are mainly always dealing with the movements. हमारा एक ही outcome रहता है, एक ही target रहता है. Alright, so motor control concept will help you to become an expert physio. If you know how the movement is happening, उसके पीछे का mechanism क्या है, तो of course आप उसको treat भी अच्छे से कर पाओगे. So for that we should know the motor control concept. So understanding motor control concept, it will help us to develop treatment strategies to improve the quality of movement in the patient. Fine. So as simple as that. Next slide, please, Tejas sir. All right. So for understanding the motor control, we should understand first the very important concept of the nature of movement. All right. So this is the basic thing what we should know. तो हमने ऐसे बोल दिया, अभी मैं कब से movement बोल रहा हूँ, but how it happens? So the main thing is there are mainly three factors. Alright? हम कोई भी मूवमेंट करते हैं उसके पीछे तीन चीजें काम कर रही है. एक तो कौन सा टास्क मुझे करना है, राइट? दूसरा इंडिविजुअल फैक्टर एंड थर्ड फैक्टर इज द एनवायरनमेंट. फाइन. सो हाउ वुड आई एक्सप्लेन दिस थिंग? In one statement, I would just say that individual generates movement to meet the demands of the task being performed within a specific environment. Right? तो इसमें इंडिविजुअल फैक्टर्स मैटर करते हैं. तो सबसे पहले व्हाट आई वांट टू डू, इंडिविजुअल फैक्टर. तो मूवमेंट जनरेट होने से पहले ये तीन फैक्टर काम करते हैं. सबसे पहले इंडिविजुअल. ओके, मुझे कोई टास्क सूझ रहा है. Alright, come on, I want to do this, I want to get up and have that water, I'm feeling thirsty. So psychological factors are working. दूसरी चीज, environment. Fine, तो मैं क्लासरूम में बैठा हूँ, मुझे प्यास लगी है लेकिन लेक्चर चालू है, तो the environment is I think not suitable, तो मैं अभी पानी पीने नहीं जा सकता, right? So environment भी काम करता है कि अगर वो मूवमेंट में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. तो इंडिविजुअल की इच्छा हो रही है, मुझे टास्क भी पता है कि ग्लास उठा के पानी पीना है, बट एनवायरनमेंट क्लासरूम है, तो भाई अभी नहीं जा पाऊंगा, लेक्चर होने के बाद आई विल गो. ऑलराइट, सो जस्ट एन एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू गिव यू.
So three factors are responsible for the movement to happen. And this thing what I am trying to explain you is a very beautiful concept. These things are happening prior to the execution of movement. Let me make it very clear. ये सारी चीजें our brain anticipates. It processes within the fraction of the seconds and we execute it. Thinking about the environment, what task I have to do, and what I want. Okay, so that's why I have mentioned the interaction of three factors: the task, individual factors, and the environment. ये तीनों चीजों को इंटरप्रेट करके our body then executes the movement. तो अगर क्लासरूम है तो मुझे अभी कंट्रोल करना पड़ेगा कि भाई बाद में पानी पीऊंगा. And if I'm in my workplace now, okay, fine. So if I want to get up, I can go. Glass is there. It's my comfortable environment. No one is going to ask me. Fine. तो environment इस तरीके से काम करता है तुम्हारी मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर मूवमेंट को क्रिएट करने के लिए बॉडी के अंदर. Alright, so that's why I written in very one simple statement: individual generates movement to meet the demands of the task performed within a specific environment. So I hope that this concept is clear. So these three factors, please remember. All right. Next slide, please. Fine. Please don't get misguided. As I said in my starting of the session, कि हम लोग मोटर कंट्रोल, तो वी थिंक मोटर मतलब मसल. हमको हर बार ऐसा बोला गया है. हाँ, नो डाउट इनिशियल स्टेजेस में हम ऐसे ही याद रहता है कि मसल जहां मोटर है वहां रिलेटेड टू मसल है भाई. तो हम लोग ऐसे ही सोचते हैं. ओके, जैसे सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन. ओके, तो मतलब हम सोचते हैं न्यूरॉन मोटर ना हो, सेंसरी ना हो, तो भाई फॉर सेंसेशन एंड फॉर द मसल उसको सप्लाई करते हैं, तो मोटर ना हो गई. लेकिन मोटर का मतलब हर बार मसल नहीं होता. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मोटर कंट्रोल, उसमें मोटर का मतलब है इट्स ऑल अबाउट द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, द नर्वस सिस्टम, मसल्स, joints, all things are included. All right, so don't get misguided. The term motor control in itself is misleading. We often think it's all about muscles and joints, but it's not like that. All right, so movement arises, remember, movement arises from the interactions of multiple processes including the muscle joints as well as the perception and cognition and the actions which are anticipated by the higher center. कोई भी चीज को एंटिसिपेट करना मतलब यू प्रिडिक्ट, यू थिंक बिफोर यू डू समथिंग. तो एंटिसिपेट करना ये एक अपना ब्रेन का हायर सेंटर का स्किल है, टू एंटिसिपेट समथिंग. ऑलराइट, तो आज मैं कोई मस्ती करता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि आज तो मार पड़ने वाली है भाई, समथिंग लाइक दैट, राइट. सो टू एंटिसिपेट थिंग्स, सो दैट इज द concept. So motor control is the combination of various factors. All right, so a very simplified chart looks little cumbersome, but I'll definitely simplify it. So as you can see in the center, जो मैंने concept वाला slide आपको दिखाया था, right? तो उसमें तीन major factor है: task, individual and environment. ये तीनों factor के input कौन से हैं? All right, तो अगर आप ध्यान से देखो तो task जो फैक्टर है that is determined by the mainly three factors, that is mobility, stability and manipulation. All right, कौन से प्रकार का आपको टास्क करना है. All right, whether I want to walk, whether I want to do some task at this place only, or whether I want to do some manipulation. तो कौन से प्रकार का टास्क है वो भी कंसिडर करना है. ठीक है. सेकेंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मूवमेंट. अगर आप देखो तो इंडिविजुअल फैक्टर में क्या काम करता है, तो इंडिविजुअल फैक्टर में देखो देयर आर अगेन थ्री सर्कल्स व्हिच आर ओवरलैपिंग. एक तो कॉग्निशन, मेरा परसेप्शन और मेरी एक्शन. ऑलराइट, मैंने पहले शायद कोई एक्टिविटी की है या फिर मेरे दिमाग में वो एक्टिविटी को मैं कैसे पहले से समझा हूं, मैंने उसको कितनी प्रैक्टिस की है. ओके, मैं कोई एक्टिविटी करने से पहले उसको कैसे अच्छी तरीके से मैंने परसीव की है, तो उसको बोलते हैं परसेप्शन. हाउ आई सी थिंग्स अराउंड मी. वो बहुत सारे फैक्टर्स तुम्हारे ब्रेन के फैक्टर्स काम करते हैं, तो वो मेरे इंडिविजुअल फैक्टर्स हो गए.
क्लियर? तो टास्क हो गया, ठीक है, इंडिविजुअल फैक्टर हो गया। दूसरा है द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में दो प्रकार के, दैट इज रेगुलेटरी और नॉन रेगुलेटरी। रेगुलेटरी एंड नॉन रेगुलेटरी में डिफरेंस क्या है? तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ एनवायरमेंट इट इज। Alright, regulatory in the sense, as I said earlier, if the environment is suitable to you, you can definitely regulate it very well. Non-regulatory है, नया environment है, you cannot predict. तो आपकी movements उस प्रकार थोड़ी hesitated या फिर slow होगी. You will take time to execute movements, you will take time to learn even the new movements. तो ये हो गया तुम्हारा environmental factors, right? So task, individual, environment. All right, so that are the factors. Okay, so that is the concept जो मैंने आपको समझाया कि मूवमेंट का नेचर समझो, मूवमेंट कैसे क्रिएट होती है वो जानो, वो मैंने आपको सारे फैक्टर्स समझा दिए। तो वो आपका कोर कंसेप्ट हुआ, ठीक है। नाउ आई विल डायरेक्टली जंप टू द पॉइंट। ऑलराइट, एज आई ओनली हैव 1 hour, so I won't be going into much detail. मोटर कंट्रोल का तो देखने जाए तो इट्स अ huge chapter. There are books written on motor control. There is a very good book known as Shumway Cook. You can all note down Shumway Cook. There is a book in that they have given very well the concepts of motor control, and I have taken the material from the same book. You can definitely refer. लेकिन मैं उसको कट शॉर्ट करके मैंने सिंप्लीफाई करके अभी सीधा मैं थियरीज पे जा रहा हूँ। ओके, तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि मूवमेंट क्रिएट करने का पीछे कौन से मैकेनिज्म्स है। ओके, तो फैक्टर्स क्लियर हो गए हमारे। नाउ मूविंग ऑन टू द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। ऑलराइट, तो मूवमेंट को समझने के लिए हमने फैक्टर्स जान लिए। नाउ थियरीज ऑफ मोटर कंट्रोल। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक even for fourth year BPT students and even the MPTs. You will have a chapter on motor control. तो उसके पीछे थियरीज क्या है? ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज तेजस सर। यस, सो थियरीज ऑफ मोटर कंट्रोल। अभी थियरीज का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय थियरीज ऑफ मोटर कंट्रोल? इफ आई टॉक इन सिंपल लैंग्वेज, सबके अलग अलग नजरिए होते हैं। देखो, मेरे लिए कोई चीज एक दिशा से मैं सोचता हूं, अगर मैं 10 आदमी को पूछूंगा वो लोग अपना नजरिया देंगे। तो दिस आर, आई वुड से इन सिंपल टर्म्स, डिफरेंट वे ऑफ सीइंग थिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग अ कंसेप्ट। तो थियरीज ऑफ मोटर कंट्रोल यही चीज है। Various research scientists and neurophysiologists, neurophysiotherapists, various physical therapists all over the world, जिन्होंने मूवमेंट को एनालाइज करने में, मूवमेंट कैसे होती है उसको समझने पीछे काम किया है। बहुत सारा रिसर्च हुआ है एंड एवरीवन हैज सम कंक्लूजन अबाउट समथिंग। तो उन लोगों ने अपनी एक थियरी बना दी कि भी मेरे मुताबिक मूवमेंट ऐसे होती है, मेरे मुताबिक ये मैकेनिज्म है जो मूवमेंट को क्रिएट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसे 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 करते डिफरेंट थियरीज हैव कम इवॉल्व फ्रॉम द बिगिनिंग सिंस 1800 और 1900 एजेस। एट दैट टाइम ये सारी थियरीज हैव इवॉल्व। सो थियरीज आर नथिंग बट द मोटर कंट्रोल which has various viewpoints regarding how the movement is controlled. All right, so yeah, the light is gone over here. I hope I will be some issue. Right. All right, I will put up my torch. Right. Okay. So theories of motor control, there are different viewpoints regarding how the movement is controlled. So a theory gives meaning to the facts, just as a blueprint provides structure that transforms the stones into a house. Okay, so what I'm trying to say by this statement is making you understand कि theories का मतलब क्या है। theories का मतलब ये है कि हमारे पास 100 ब्रिक्स है, तो वो 100 ब्रिक्स को मैं अलग अलग तरीके से अरेंज करके उसमें अलग अलग डिजाइन के घर बना सकता हूं। लेकिन जैसा अरेंजमेंट, जैसा डिजाइन, वैसा घर का शेप अलग आएगा। ऑलराइट, सो व्हाट हैपेंस इज different theories have different conclusions and different concepts. I think there is some problem with the presentation.
there is a light electricity issue. I'm sorry for the interruption. Please cooperate. All right. So by the time I guess I'll present. Tejas sir is one disconnected. All right. So by the time Tejas sir comes, let me continue with my discussion. Okay. So theories of motor control I was talking about. तो सबके अलग अलग नजरिए है, सबने अपनी अपनी थियरी बनाई है. तो मेनली देर आर ऑलमोस्ट 5 to 6 थियरीज. तो ये थियरी सबका कंसेप्ट एक ही है, ऑलराइट, बट सबकी थिंकिंग अलग है, राइट. तो वो थियरीज हम एक एक करके आई विल क्विकली गिव यू अ ओवरव्यू. I think I'll present my screen. All right, I request everyone to pin my screen. I guess Tejas sir is unable to connect. I'll present my PPT. You will be seeing my screen. I request everyone to go to my ID and click and pin that icon. Okay, I'm trying to present my screen now. I request everyone to there are issues with the light here. I hope everyone is able to see my screen. Are you able to see my PowerPoint? Please, everyone, I request. Yes, sir. Yes, sir. We can see it. Yes, thank you. Thanks a lot. Thank you. Thanks for the feedback. Yeah. Okay, so let me continue. Tejas sir is disconnected. Somehow electricity issue is there. Okay, so I was on my slide, theories of motor control. All right. So these are different theories which have various explanation, which has been compiled with an aim to understand how the motor control is achieved. So I'll start with the various theories. So just as the same stones can be used to create different types of houses, there are different theories of motor control explaining us the achievement of motor control in the body. All right, and mind well, these theories will guide the therapist that on that basis we are following all the approaches now. So now let me make a point clear. हम जो बोबाद concept, brainstorm, roots, जो भी आप अभी पढ़ते हो, and we practice on the patients, we work behind them for improving the movement. तो ये सारी जो approaches हम follow करते हैं, वो उसका basis है ये theories of motor control. All right, so mind well, Bobath, brainstorm, roots, PNS, sensor integration, conductive education, and lots of approaches are there in the rehabilitation now. So these are all coming from all these theories of motor control. All right, so moving on to the first theory. All right, so the reflex theory. So नाम से पता चलता है. All right, so there was a neurophysiologist Charles Sherrington. It is also known as Sherrington's theory of motor control. तो इन्होंने जो थियरी दी है उसका नाम है रिफ्लेक्स थियरी. तो इनका एक थिंकिंग था. He believed that reflexes are the building blocks of movement. रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? अगर मैं कोई पार्ट को स्टिमुलेट करता हूं तो वो पार्ट रिस्पॉन्ड करेगा. ऑलराइट, ओके. सो
you everybody knows what is reflex. So there is an action and reaction. तो what Sherrington told कि बॉडी की मूवमेंट तभी होगी जब उसको स्टिमुलस मिलेगा, वरना मूवमेंट नहीं हो पाएगी. Alright, so that's what he said, Sherrington. तो उसके बेसिस पे रिफ्लेक्स थियरी इन्वॉल्व हुई. So he says the basic unit of motor control are reflexes. How he explained this theory? When a child is born, let me give an example. आपको सबको पता है कि भी there are primitive reflexes, right? So primitive reflexes क्या है? When a child is born, for few years, there prevails the primitive reflexes in the body. Alright? तो primitive reflexes कुछ एज बाद जब चाइल्ड वॉक करने लगता है वो गायब हो जाते हैं इसलिए अपने आप, तो इसलिए उसको बोलते हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस. फाइन. तो शेरिंगटन ने ऐसा बोला था कि भाई ये रिफ्लेक्सेस की वजह से हम मूवमेंट लर्न करते हैं और वही रिफ्लेक्सेस हमको कुछ सिखा के फिर गायब हो जाते हैं बॉडी में से. राइट. तो फॉर हिम ही सेज रिफ्लेक्सेस की वजह से ही हम मूवमेंट अभी भी कर पा रहे हैं और वो जो हमने पहले सीखा है वही हम पूरी जिंदगी उस बेसिस पे मूवमेंट करते रहते हैं. तो ये उसकी थिंकिंग थी. और दूसरा उसने क्या मेंशन किया कि जब भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज होता है तो बॉडी वापस वो रिफ्लेक्सेस सारे भूल जाती है और इट गोज बैक टू दी प्रिमिटिव स्टेज और इसीलिए एबनॉर्मल मूवमेंट्स प्रोड्यूस होती है. तो ये शेरिंगटन का थिंकिंग था. राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिफ्लेक्स थियरी. तो मेन चीज हमको क्या याद रखनी है रिफ्लेक्स थियरी में, दैट रिफ्लेक्स इज द बेसिक ब्लॉक ऑफ मूवमेंट टू बी क्रिएटेड. तो बहुत सारे रिफ्लेक्सेस इकट्ठे होकर मूवमेंट क्रिएट होती है. ये शेरिंगटन ने उसकी थियरी में समझाया था. ओके. सो आई होप आई हैव मेड इट वेरी सिंपल. तो आपको इतना ही याद रखना है रिफ्लेक्स थियरी के बारे में, दैट रिफ्लेक्सेस विल प्रोड्यूस द मूवमेंट. लेकिन हर एक थियरी का कुछ ना कुछ लिमिटेशन है. अभी आप लॉजिकली सोचो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो रिफ्लेक्स थियरी की लिमिटेशन क्या है? It does not adequately explain and predict movement that occurs in absence of sensory stimuli. रिफ्लेक्स थियरी क्या बोल रहा है कि भी स्टिमुलस मिलेगा तो ही मूवमेंट होगी. लेकिन हमको पता है देयर आर समथिंग नोन एज इनवॉलंटरी मूवमेंट, ऑटोमेटिक मूवमेंट. ये कहां से होती है? तो इसका जवाब रिफ्लेक्स थियरी नहीं दे पाएगा. तो जरूरी नहीं है स्टिमुलाई मिले तो ही तुम्हारी मूवमेंट सॉरी स्टिमुलस दो तो ही तुम्हारी मूवमेंट होगी. तो ये थियरी कहीं ना कहीं इट इज लैकिंग फ्यू कंसेप्ट्स एंड इट इज नॉट आंसरिंग ऑल योर लॉजिकल डाउट्स कि भी ऑटोमेटिक मूवमेंट्स कैसे होती है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स कैसे होती है. तब तो कोई स्टिमुलाई नहीं देता, मूवमेंट अपने आप ही होती रहती है. तो उसका जवाब कौन देगा? ओके. तो ये लिमिटेशन होगी रिफ्लेक्स थियरी की. तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी टू प्रोड्यूस इवन नॉवेल मूवमेंट्स. नॉवेल मूवमेंट्स मतलब नई मूवमेंट्स. ओके. कोई बर्थ के बाद तुरंत ही गाड़ी चलाना नहीं सीखता. कोई टेनिस प्लेयर पैदा होते ही नहीं हो जाता, वो उसकी प्रैक्टिस करके सीखता है. तो वो उसका जवाब रिफ्लेक्स थियरी नहीं पाएगा. ओके. तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ रिफ्लेक्स थियरी. सो देयर इज नो टेनिस रिफ्लेक्स इन द बॉडी कि भाई टेनिस रिफ्लेक्स जिसमें बॉडी में वो टेनिस प्लेयर बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं. तो ये थियरी का एक लिमिटेशन हो गया. It doesn't explain you the concepts of involuntary movements and कोई भी नई मूवमेंट हमको सीखनी है तो वो हम कैसे सीख पाते? उसका रिफ्लेक्स तो कहाँ हमारे में था ही. ओके. तो ये उसकी लिमिटेशन होगी. तो दैट इज अवर फर्स्ट थियरी, रिफ्लेक्स थियरी. लेकिन कहीं ना कहीं इसके भी कुछ पॉइंट्स और कुछ पहलू अच्छे हैं. ओके. तो ये भी हमको कंसिडर करना है. ओके. तो ये अब तक का लिटरेचर है. तो उसमें फर्स्ट हमने क्लियर किया रिफ्लेक्स थियरी, लेकिन इसकी लिमिटेशन है. अभी हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमको कुछ और नए पहलू सामने आएंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पीपल हैज टू से. So there is something known as hierarchical theory. अभी ये थियरी का क्या है? What do you mean by hierarchy? Hierarchy मतलब कि कोई भी चीज लेवल वाइज होती है, हायरार्की बोलते हैं उसको. जैसे मैं कॉलेज का एग्जांपल देता हूँ बेस्ट. ओके. सो टॉप मोस्ट पर्सन इन द कॉलेज इन अ इंस्टीट्यूट इज अ प्रिंसिपल. उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल, फिर उसके नीचे एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज होती है. तो जैसे प्रिंसिपल सर बोलेंगे ऐसे वाइस प्रिंसिपल सर
उसको डायरेक्ट करेंगे और ऐसे ही नीचे वाले स्टाफ उनको पूरा गाइडेंस मिलता है एंड लास्ट में टीचर्स के अंडर में सारे स्टूडेंट्स और सारे आ जाते हैं कैटेगरीज। क्लियर? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ हायरार्की। तो ये थियरी क्या बोलती है, हायरार्कियल थियरी, दैट द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्की। ओके, तो ये हमको सबको ये कंसेप्ट तो सबके दिमाग में रहेगा ही कि हाँ ब्रेन जैसे बोलता है ऐसे सब होता है, ब्रेन इज एट द टॉप और उसके वो जैसे ब्रेन में मूवमेंट सोचते हैं हम लोग उस मुताबिक सब नीचे होता है। ओके, तो ये क्या है, इट इज द कंसेप्ट ऑफ हायरार्की थियरी। ओके, तो इसको बोलते हैं हायरार्कियल control, organizational control that is top to bottom. It is known as top-down model. Remember, it is known as a top-down model. So the current concept describing hierarchical control within the nervous system recognize the fact that each level of nervous system can act on the other level depending on the task. Okay, तो ये थियरी क्या बोल रहा है कि भी जैसे आपको मूवमेंट इनिशिएट करनी है या फिर मूवमेंट होना है तो द हायर हैज टू इंस्ट्रक्ट, तो ही उसके मुताबिक बाकी के फॉलो करके मूवमेंट लास्ट में एग्जीक्यूट होगी। तो इट इज लाइक अ टॉप डाउन मॉडल, टॉप से स्टिमुलस आया तो उसके मुताबिक नीचे पास होके फिर मूवमेंट होगी। तो ये एक थिंकिंग। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड द cerebral cortex is at the top, brain. Okay, so motor control is hierarchically arranged. तो ये थोड़ा सेंसिबल लगता है आप लोग को भी, ये थियरी ऐसा लगेगा हाँ ऐसा ही होता है ना, ब्रेन टॉप पे है, वो नीचे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन स्टेम के थ्रू कमांड भेजेगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो मसल को इनर्वेट करता है और फिर मूवमेंट होती है। तो ये थोड़ा सेंसिबल है और हाँ ये सेंसिबल है, मैक्सिमम लोग हायरार्कियल थियरी को ही ज्यादा मेंटली एक्सेप्ट करते हैं। सो दैट्स अ फैक्ट। ओके, सो एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड आई हैव गिवन 3 लेवल्स। सो हायरार्कियल थियरी क्या बोलती है कि देयर आर मेनली 3 लेवल्स, हायर लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। ऑलराइट, सो हायर लेवल विल इन्वॉल्व द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड द मोटर एरियाज। ऑलराइट, और वहां से जो मिडल लेवल है एट द जंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम, दैट इज द मिडल लेवल। और मिडल लेवल के नीचे है पूरा लोअर लेवल जिसमें पूरा स्पाइनल कॉर्ड एंड दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज included. Okay, so as you can read in the points, there are 3 levels. The higher centers regulate and control the middle and the lower centers, right? Damage to the CNS results to the disruption of normal coordinated function of this levels. तो इस थियरी के मुताबिक क्या है कि जब भी ब्रेन में डैमेज होता है या कहीं पे भी हायर लेवल पे डैमेज होता है तो उसकी वजह से मिडल और लोअर लेवल डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके फाइन, आई ऑल्सो एग्री विद दिस थियरी एट टाइम्स। ओके ओके, आई थिंक देयर इज अगेन लाइट इश्यूज ओवर हियर। I hope the recording is going on. That's okay. Okay, I hope I am clear. My connectivity is there. Yes, fine. Okay. Connected, sir. Yes, thank you, sir. Right. So हायरार्कियल थियरी के मुताबिक क्या है, हायर सेंटर को डिस्टर्ब हुआ, वहां डैमेज हुआ तो उसकी वजह से मिडल और लोअर लेवल पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, so that is quite, so you can take an example of a stroke patient. So when the brain is getting damaged, the descending levels are getting all disturbed. All right, so that is the hierarchical theory. तो ये 2 theories complete हुई हमारी। दूसरा पहलू है पूरा, that is known as motor programming theory. अभी ये प्रोग्रामिंग थियरी एक अलग ही चीज है। आपने हायरार्कियल देख लिया, ऑलराइट, एंड वी आल्सो सी दी फर्स्ट थियरी दैट इज रिफ्लेक्स थियरी। अभी ये मोटर प्रोग्रामिंग थियरी का कहना क्या है कि देयर आर मोटर प्रोग्राम्स प्री स्टोर्ड। ये थियरी ऐसा बोलती है कि सारी मूवमेंट्स के पैटर्न्स ब्रेन के अंदर स्टोर्ड रहते हैं as the name of motor programs. Okay, and this theory says the concept of central motor pattern or motor programs are more flexible than the concept of a reflex.
ऑलराइट, तो ये क्या बोलते हैं कि रिफ्लेक्स थियरी ने क्या बोला था कि भाई स्टिमुलस दिया तो ही सामने मूवमेंट होगी। ये उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट कंसेप्ट। देयर इज प्री लोडेड मोटर पैटर्न्स इन द ब्रेन। तो हमको इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि हमको सारी चीजें पहले से पता ही है, ब्रेन के अंदर सारी चीजें लोडेड है और उसके पैटर्न्स, मोटर पैटर्न्स, वो मूवमेंट के पैटर्न्स दे आर स्टोर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जिसको बोलते हैं सेंट्रल पैटर्न जनरेटर्स। तो ये सीपीजी मॉडल बोलते हैं इसको, ये थियरी को ऐसे भी बोलते हैं द सीपीजी मॉडल। ओके, और दूसरा ये थियरी में क्या एक्सप्लेन किया है सीपीजी मॉडल में कि हर एक मूवमेंट का एक स्पेसिफिक न्यूरल सर्किट है ब्रेन के अंदर। तो ये एक वर्चुअल कंसेप्ट है पूरा। कई लोग ये कंसेप्ट को भी मानते हैं कि हर एक मूवमेंट करने का एक स्पेसिफिक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है और उसको ये लोग सीपीजी नाम देते हैं, सेंट्रल पैटर्न जनरेटर। ऑलराइट, सो दैट्स वन ऑफ द थियरी, मोटर प्रोग्रामिंग थियरी, राइट। इसके भी कुछ लिमिटेशंस है। So the motor program concept does not take into account the fact that the nervous system must deal with both musculoskeletal and environmental variables in achieving the movement control। तो इसकी लिमिटेशन क्या है? हमने स्टार्टिंग में कंसेप्ट पढ़ लिया कि भाई एनवायरमेंट भी फैक्टर्स काम करते हैं, राइट, इंडिविजुअल फैक्टर्स भी काम करते हैं और कौन सा टास्क है वो भी फैक्टर काम करता है। लेकिन ये थियरी में कहीं पे भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मेंशन नहीं किया है, तो ये उसकी लिमिटेशन होगी। ये थियरी ऐसा ही बोलती है सब कुछ ब्रेन में स्टोर्ड है और सब पैटर्न्स प्रीलोडेड है, बस वहां से स्टिमुलस होगा और मूवमेंट हो जाएगी। तो ये थियरी ऐसा बता रही है, लेकिन उसकी लिमिटेशन है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कहीं मेंशन नहीं किया है, तो ये उसका एक ड्रॉबैक हो गया। ओके, सो मोटर प्रोग्रामिंग theory. So there are motor programs preloaded in the brain and there are specific neurons, specific CPGs in the brain which creates movement. तो ये एक थिंकिंग है। ओके, तो ये तीन अलग अलग नजरिए हमने देख लिए। Now there is something known as systems theory which was given by Bernstein. It is known as Bernstein's theory. इसने पूरा कंसेप्ट, सारे जो तीन कंसेप्ट हमने देखे अब तक के, उसको पूरा ब्रेक थ्रू कर दिया। इट इज जस्ट क्लियर आउट ऑल द थिंग और कुछ नया लाया है। अभी इसमें नया क्या है? व्हाट द सिस्टम्स थियरी सेज, बर्नस्टाइन इज टेलिंग कि सीएनएस डज नॉट ऑपरेट इन स्ट्रिक्टली डिसेंडिंग मैनर। तो वो जो हायरार्कियल मॉडल है, रिफ्लेक्स है, वो सब भूल जाओ। बोले ये सब बराबर नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक हायर सिस्टम, देयर इज नथिंग लाइक मिडल सिस्टम और नथिंग लाइक लोअर सिस्टम। ओके, सारी सिस्टम्स बॉडी के अंदर है, जैसे नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, सब सिस्टम अपने आप अंदर अंदर साइलेंटली कोऑर्डिनेट करके, म्यूचुअली कनेक्ट करके काम करती है। उसने बोला देयर इज नथिंग नोन एज हायर, नथिंग मिडल, नथिंग लोअर, देयर इज नथिंग लाइक रिफ्लेक्स, नो रिएक्शन, नो स्टिमुलस। सारी सिस्टम अंदर अंदर कनेक्टेड है, जैसे रिक्वायरमेंट ऐसे वो सिस्टम अंदर अंदर म्यूचुअली कनेक्ट करके मूवमेंट को कंडक्ट या एग्जीक्यूट करवाती। तो दिस इज अ डिफरेंट, टोटली आउट ऑफ द बॉक्स थॉट बाय बर्नस्टाइन, एंड ऑफ कोर्स इवन दिस कंसेप्ट इज क्वाइट एक्सेप्टेबल, राइट। सो इट इज टेलिंग नो हायर लेवल्स with which the control of the operation of the lower limbs. There is a mutable relationship between the various levels so that each level will alternate between the command and the subordinate roles in relation to the other levels. Okay, तो कोई लेवल वाला सिस्टम नहीं है, सारे सिस्टम्स अंदर अंदर मिलजुल के शांति से कोऑर्डिनेट करके मूवमेंट कंडक्ट करवाते हैं। ओके, देयर इज नो सुपीरियरिटी, नो इंफीरियरिटी। Alright, so that is the concept of systems theory. Fine. So there is something known as the fifth theory. ये भी एक अलग थिंकिंग है। ओके, तो हमने अब तक चार थियरी देख ली, चार थिंकिंग देख ली।
नाउ द नेक्स्ट इज डायनामिक एक्शन थियरी। अभी डायनामिक एक्शन थियरी क्या कहता है, दैट देयर इज नो नीड फॉर हायर सेंटर इशूइंग कमांड इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेटेड एक्शन। तो ये भी कहीं ना कहीं सिस्टम्स थियरी जैसा ही इसका कंसेप्ट है। डायनामिक एक्शन थियरी का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट सिस्टम्स थियरी जैसा है। इट सेज दैट व्हेन अ सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स कम टुगेदर, its elements behave collectively in an orderly manner. All right? Movement could emerge as a result of interacting elements without the need for specific command or motor programs with the nervous system. Okay? तो ये थियरी कहीं ना कहीं सिस्टम्स थियरी जैसी ही है। ऑलराइट, बट एक एक्स्ट्रा पॉइंट है इसका सिस्टम थियरी के अलावा, इसने डिफेंड किया है इवन दी मोटर प्रोग्राम थियरी को भी। तो ये थियरी में ऐसा भी मेंशन किया गया है कि देयर इज नथिंग नोन एज मोटर प्रोग्राम एंड देयर इज नथिंग नोन एज हायरार्की सिस्टम। तो सिस्टम्स और डायनामिक में यही डिफरेंस है कि इसने मोटर प्रोग्राम को भी डिफेंड किया है कि भी मोटर प्रोग्रामिंग जैसा भी कुछ नहीं होता ब्रेन के अंदर। फाइन, तो इट इज नथिंग बट अ डायनामिक एक्शन थियरी। डायनेमिक एक्शन मतलब एवरीथिंग इज स्पॉन्टेनियस। ये थियरी के मुताबिक ऐसा है, मूवमेंट इज स्पॉन्टेनियस, देयर इज नो प्रिडिक्शन, देयर इज नो हायर कंट्रोल, नो ब्रेन कंट्रोल, नो मोटर प्रोग्रामिंग, नथिंग। जैसी जरूरत, जैसा एनवायरनमेंट, जैसी सिचुएशन, वैसा मूवमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। इसलिए इसका नाम दिया है डायनामिक एक्शन थियरी। ओके, so it's a kind of a very it is trying to say that movement is spontaneous, you cannot predict how it is going to happen. Okay, तो ये एक वाइडली एक्सेप्टेड कंसेप्ट है फिलहाल डायनामिक एक्शन थियरी। तो ये मैंने आपको मेन 5 थियरीज समझाई, राइट? सो दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स बाय डिफरेंट न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। they have given different different concepts कि मूवमेंट कैसे होती है और उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। अभी इसका क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या है? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थियरीज हमको क्लिनिकली क्या फायदा हुआ है? तो फायदा हमको ये हुआ है, ये थियरीज के कंसेप्ट इतने रिसर्चेस करने के बाद ये मूवमेंट्स की वजह से डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस बाहर आए हैं। जैसे बोबात कंसेप्ट है, राइट? रूट्स अप्रोच, ब्रूनस्ट्रॉम अप्रोच, पीएनएफ, सेंसर इंटीग्रेशन थेरेपी, ये सारे रिफ्लेक्स और हायरार्कियल थियरी के बेसिस पे ही इवॉल्व हुए। ओके, सो यू कैन ऑल रिमेंबर दिस, द बेसिस ऑफ द अप्रोचेस व्हाट वी फॉलो इन द ट्रीटमेंट आर नथिंग बट द रिफ्लेक्स एंड हायरार्कियल थियरीज ऑफ मोटर कंट्रोल। ऑलराइट, तो मेनली हम लोग रिफ्लेक्स और हायरार्कियल थियरी के मुताबिक ही काम करते हैं। आप सोचना कभी शांति से, राइट? दूसरा, आपने कई बार पढ़ा होगा कि भी न्यूरो फैसिलिटेशन टेक्निक्स है, राइट? वी हैव न्यूरो फैसिलिटेशन टेक्निक्स जैसे स्ट्रोकिंग, रबिंग, आइजिंग। यू ट्राई टू स्टिमुलेट डिफरेंट सेंसेस इन द बॉडी जिसकी वजह से मूवमेंट क्रिएट होती है। ये सारी चीजें, it is focused on retraining motor control through techniques designed to facilitate or inhibit different movement patterns. तो ये जो न्यूरो फैसिलिटेशन टेक्निक्स वगैरह आई है, टैपिंग द मसल बेली, स्ट्रेचिंग, ये सारे कंसेप्ट्स, ये सब मोटर कंट्रोल थियरीज के रिजल्ट की वजह से ही, उनके कंक्लूजन्स के आइडिया को लेके ही ये सारी टेक्निक्स डेवलप की गई है। ऑलराइट, थोड़ा वेग कंसेप्ट है बट we have to take it in a very conceptual straight way. Alright, so after studying all this theory, थोड़ा confusion definitely रहेगा। मैंने भी जब first time सुना था मेरे टीचर के मुंह से, तो मैं I was like in a different state. I had to had a coffee after the lecture of my faculty. Fine? तो दिमाग में सवाल होगा कौन सी थियरी बेस्ट है इसमें से? ओके, तो there is no such best theory till date कि भाई ये थियरी को ही फॉलो करो। Still the things are evolving, alright? So there is no single theory जो मूवमेंट के सारे फैक्टर्स या सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है अब तक।
हर एक कोई ना कोई थियरी की कोई ना कोई लिमिटेशन है, ऑलराइट। कई पहलू डायनामिक एक्शन में अच्छे हैं, कई पहलू रिफ्लेक्स और हायरार्किकल में अच्छे हैं, तो किसी में एनवायरमेंटल मिसिंग है, किसी में इंडिविजुअल फैक्टर का मेंशन नहीं किया, कोई बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब मोटर प्रोग्रामिंग ब्रेन में ही सब प्रोग्राम फिक्स है। तो सबका अलग अलग कंसेप्ट है, बट व्हाट बेस्ट एज अ फिजियो व्हाट वी कैन डू इज यू नीड नॉट स्टिक टू वन थियरी, लेट्स कीप इट इंटीग्रेटेड। ओके, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या? सभी थियरीज के पॉजिटिव फैक्टर्स जो आप एक्सेप्ट कर पाओ, वो सारी चीजों को आप यूज करके क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई करो, राइट। सो इन अवर क्लिनिकल प्रैक्टिस we have been using the approaches mainly from the reflex and hierarchical theory। तो मैंने जैसे आपको बताया PNF, बोबाक, ब्रुनस्ट्रॉम, सेंसरी इंटीग्रेशन, ये सारे रिफ्लेक्स और हायरार्किकल थियरी के ही आउटकम है। तो मैक्सिमम क्लिनिकली रिफ्लेक्स और हायरार्किकल को फॉलो करते हैं। आई एम नॉट टेलिंग दे आर द बेस्ट, बट इन करंट सिनेरियो क्लिनिकल प्रैक्टिस these two theories are widely practiced, okay। एंड स्टिल अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स में अभी देखने जाओ तो देयर आर समथिंग नोन एज टास्क ओरिएंटेड अप्रोचेस, देयर इज समथिंग नोन एज मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम। ये सारे कंसेप्ट्स अभी इवॉल्विंग है, ऑलराइट। तो ये सारे धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं एंड एवरीबडी इज ongoing with the practices and trying to still understand the movement is how the movement is created and it is being evolved. As a physio, we always try to rectify the movement, try to uh, correct the movement and make the movement as smooth and as normal as possible। क्योंकि इंजुरीज के बाद ये मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है और कहीं ना कहीं हम सारी न्यूरो फैसिलिटेशन टेक्निक्स और इंटरवेंशंस ये थियरीज के बेसिस पे ट्रीटमेंट देते हैं, अप्रोचेस के बेसिस पे हम ट्रीट करते हैं और मूवमेंट को वापस लाने की ट्राई करते हैं, ऑलराइट। सो I think I hope I have summed up the things. And if you have any questions, please definitely feel free Yes, to ask. Yes, sir. Over to you, Tejas, sir. Thank you. you can write the questions in chat box. If you have any query, you can write in a chat box. Sir, I will just stop my screen being presented. Yes, sir. Yes, sir. Yes, request to all participants. If you have any query, you can ask in a chat box. You can write in chat box. So we will wait for 1 minute. Yes, definitely, sir. Yes, to all the participants. If you have any query, you can write in a chat box. So there is one question. Can you please explain the difference between the system theory and dynamic action theory with an example? Yes, definitely. That was an expected question, and especially from John C. Yes, John C. That's a good question. See, as I explained during my session, systems theory and dynamic action theory, they basically overlap each other. What difference is there in the dynamic action theory is they have depended more on the concepts of motor programming. So as I mentioned in the slides earlier, it has depended more on the motor programming concepts. Otherwise, systems and dynamic action theory, they are more or less same. और दूसरी चीज डायनेमिक एक्शन थियरी में ये बताया है कि सिस्टम्स थियरी में क्या है, वो लोग ने बताया कि भाई सारी सिस्टम्स अंदर
अंदर कनेक्टेड होके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने आप कोऑर्डिनेट करके काम कर लेती है। डायनेमिक एक्शन थियरी का एक प्लस पॉइंट क्या है, वो ऐसे बोलता है कि मूवमेंट स्पॉन्टेनियस है, देयर आर नो हायर सेंटर्स, there are no commands required, there are no programs also needed. Okay, so I think dynamic action theory is different in that sense. Fine. Yes. There is a one more question, sir. If the person develops the synergistic pattern, which techniques gives the best outcome? Brainstorm, where reflexes are considered normal, or Bobath, where reflexes are said to be decreased? Okay, fine. Yeah, Abavaram Johar Maina, yeah, that's a good question. The person develops the synergy, all right, so which technique gives the best outcome? Brainstorm, where reflexes are considered normal, or Bobath, where the reflexes are said to be decreased. See, synergy is a concept in which there is the movements are altered because of the incoordinated muscle movements. Okay, तो बॉडी का जो भी पोस्चर है वो पूरा सिनर्जी की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है. All right. So what you're trying to just I'm trying to understand your question again. Which technique gives the best outcome? All right. So as you can say, we have been following the neurofacilitation techniques. So depending on the condition, see synergy में mainly क्या होता है, the we believe the Bobath concept, जिसमें the muscle tone is going too high and we use inhibitory techniques. All right, we use the inhibitory technique to reduce the tone, like stretching. There is technique known as the prolonged icing. So all the inhibitory techniques you can use, and you can suppress the synergy patterns. All right, so I always be in a dilemma what to choose in the stroke patient. All right, so you can go for the inhibitory techniques. Abarvam, I don't know how I spell it. Abavaram. Right, so you can go for the inhibitory technique. You need to suppress. Synergy patterns are more of the in which the tone is too high, the motor control is lost, and it is all hyped up. So it's better you use inhibitory techniques in the synergy patterns. All right. Yes. So we'll wait for 30 seconds. If you have any query, all the participants, you can write in the chat box. Yeah, as of now, I am writing my email ID in the chat box. I request whoever is free, grab some time and give me feedback of my webinar. Even if you come up with any doubts, this is my email ID. Maybe you can, I would like to hear from you. Please give me feedback. And if you have questions later also, if you're going through the material, definitely you can mail me and we'll have a discussion on this. And the reference book is Shamve Cook. There is something known as motor control applied to the applied aspects of motor control. You can definitely refer that book. So I think, sir, we have cleared all the doubts. Thank you, sir, for providing the explicit information about the motor control theory. We are really thankful Yes. to you. Thank you. I would like to thank our founder and president, sir, Sri Jagdishbhai Patel, sir, Joint Managing Trustee, Sri Kamalben Patel, ma'am, our CMD, sir, Sri Dhruv Patel, sir, for providing platform to arrange these sessions. I extend my gratitude to Campus Director Hardi Patel, ma'am, for continuous support. My heartiest thanks to our principal, Dr. Mehul Kumar Jadhav, sir, Vice Principal, Dr. Sarfaz Nawaz Shah, sir, for continuous guidance.
I owe my special gratitude to Gade Dada for graphic designing. And at last, I would like to thank my colleagues and all the participants for attending the sessions with great enthusiasm. Thank you. Yes, thanks a lot, Tejas sir, for moderating, and I even thanks my management for encouraging me, and I thanks all my staff members for always being together. Yes, thanks a lot.